बुलेटिन का आगाज अहम तरीन खबर से। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफी 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे ऐवान सदर भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला करार दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे में लिखा कि जिस आइन की हिफाजत का हल्फ उठाया था वो अब मौजूद नहीं रहा। 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बनते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस मुस्ताफी हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। दोनों जजेस ने इस्तीफे सदर ममलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के मतन में अहमद फराज का शेर भी लिखा। उन्होंने लिखा, मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। 27वीं तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगी है। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। मैं पूरी जिम्मेदारी मुकम्मल शऊर के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे में लिखा, 27वीं तरमीम की मंजूरी से पहले मैंने चीफ जस्टिस को खत लिखकर इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि इसमें तजवीज करदा शिकों का हमारे आईनी निजाम पर क्या असर पड़ेगा। अगर आने वाली नस्लें उन्हें किसी मुख्तलिफ नजर से देखेंगी तो हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी की नकल नहीं हो सकता। जजिस का लिबास आखिरी बार उतारते हुए सुप्रीम कोर्ट जज के ओहदे से इस्तीफा पेश करता हूँ, जो फौरी तौर पर मुअस्सर होगा। अल्लाह करे कि जो भी फैसले करे वो सच्चाई के साथ करे। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में कल इशाइया रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजिस को भी इशाइये में मदऊ किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 1 दिसंबर को ओहदे से रिटायर्ड होना था। जिस हलचल का जिक्र पिछले 3-4 दिन से कर रहा था वो चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम लिखा, अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया, वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। अब हिसाब होगा प्रॉक्सीज का। याद रखें, ये लफ्ज कौम को अब समझ आ गई होगी कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वजीर आजम करेंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। मुजवजा एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वजीर आजम कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट आर्टिकल 176C में तरमीम पर जारी वजाहत में कहा गया, मौजूदा तरमीम सिर्फ आर्मी चीफ की कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुर को शामिल करने के लिए है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी आर्मी चीफ की कोई तकर्रुरी नहीं की जा रही। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वजीर आजम करेंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। मुजवजा एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वजीर आजम कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रैक्टिस के लिए मौजूद श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ से भी मुलाकात। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, हम सब सिक्योरिटी से मुतमिन हैं, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रैक्टिस के लिए मौजूद श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का फर्दन शुक्रिया अदा किया। उनकी जानिब से कहा गया, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना
अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ से भी मुलाकात। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, हम सब सिक्योरिटी से मुतमईन हैं, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फर्दन श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया गया और उनकी जानिब से कहा गया, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया, दौरे पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ से भी मुलाकात हुई, जिस पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने यह कहा कि हम सब सिक्योरिटी से मुतमईन हैं और पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। इस्लामाबाद में बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की खसूसी तकरीब, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खसूसी तौर पर शरीक हैं। Incredibly strong institutional links, but they would be nothing without the people, the personal connections that we all make every day. Now, last year our theme was brilliantly British. This year we've chosen a different theme, which you can see on the side here, because as High Commissioner I'm proud to represent not just one country, but 4 nations: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Each nation adds its own distinct flavour to our relationship with Pakistan, and each nation has long embraced the over 1.6 million strong Pakistani diaspora. Today we have 15 British MPs of Pakistani heritage who serve in Parliament, including Shabana Mahmood, the first Muslim woman Home Secretary, and many other British leaders who celebrate their Pakistani heritage. From Michelle Hussein's trusted journalism with global reach, to Riz Ahmed's acclaimed acting in England, Jason Mohammed's broadcasting experience in Wales, and Hamza Yousaf's former political leadership in Scotland, creative spirits and cultural links shine across our 4 nations. But it's not just these A-list names that illustrate the strength of the UK-Pakistan relationship. England leads in finance and innovation, Scotland shines through with its world-class universities and renewable energy leadership, Wales brings lyrical traditions that inspire, and Northern Ireland thrives with its creative industries, and all of them have different foods, which I hope you will have the chance to experience tonight. And across all of this, the Pakistani diaspora are deeply woven into the fabric of British society. As we celebrate his birthday, it would be remiss of me not to mention one of His Majesty's greatest passions, and I'm speaking, of course, of tackling climate change. His Majesty's lifelong dedication to climate action and global partnership is deeply inspiring. And partnership underpins absolutely everything that we do with the UK and Pakistan. Our trading relationship has grown to over 2 trillion rupees, £5.5 billion. And a very good evening. It's my great pleasure to join you this evening to celebrate the birthday of His Majesty King Charles III, a leader who has led an exemplary life of public service. I have always been a great admirer of His Majesty's infinite energy and his dedication and unwavering commitment to global causes which continue to inspire millions across the United Kingdom, the Commonwealth and far beyond. High Commissioner, at the outset, I'd like to deeply appreciate the heartfelt condolences extended by the government of the UK and yourself on the dastardly terrorist attacks in Islamabad and other parts of Pakistan. Ladies and gentlemen, terrorism remains a grave threat to global peace and stability. With its valiant armed forces and resilient people, Pakistan stands united and determined to confront and defeat this scourge in all its forms and manifestations. Dear guests, tonight, as we celebrate His Majesty's birthday, I recall my fond memories of the grand coronation ceremony that I attended personally 2 years ago. Moreover, last year in September, I received a warm telephone call from His Majesty and we exchanged views on a wide range of issues.
The Pakistan-UK multifaceted partnership would not be where it is today without the personal interest and patronage of the royal family. Ladies and gentlemen, tonight we also celebrate the enduring friendship between Pakistan and the UK. Nearly 2 million British citizens of Pakistani heritage add great value to this relationship and are playing a very proactive role in all walks of life back in the UK. Thousands of young Pakistanis have benefited from the programs run by the British Council in Pakistan, while thousands more have studied in British colleges and universities. And I am personally witness to one of the finest programs which was undertaken between DFID and the government of Punjab. When I was heading Punjab province, it was a program which was in education, health, skill development, and of course primary health care. And it was a program, I think it was one of the finest in the recent decades all over the globe. And that was a great partnership, and I'm sure this is multiplying as I speak in all the provinces of Pakistan. Ladies and gentlemen, we recall with deep appreciation the numerous royal visits to Pakistan, including His Majesty's visit in 2006, as well as the historic visits of Queen Elizabeth II. I would like to reiterate my most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. High Commissioner, you have contributed meaningfully and in a wonderful way to promote our bilateral relations. And I'd like to thank you for your personal commitment and for your outstanding efforts in this behalf. And of course, your important role in the revival of PIA flights to the UK. I think thousands of passengers who fly to Manchester from Pakistan, and soon they will fly to London. They will always remember your role. In the end, I would like to once again convey my best wishes and prayers for His Majesty's continued good health, happiness, and long reign. While the candles on the cake grow in number each year, we pray that His Majesty will continue to inspire the world with his humor, humanity, and heart. Long live Pakistan-UK friendship. I would now like to invite our High Commissioner and our Honourable Chief Guest, Prime Minister Sharif, to cut the beautiful birthday cake. बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। तकरीब में शिरकत बाइस एजाज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत हैं।